and welcome to Kashmir Now. I'm your host Lipakshi. Let's start with the headlines from this week's episode. Floods continue to batter life across illegally occupied Gilgit-Baltistan. High-tech poly houses in Srinagar preparing hybrid vegetable seedlings to increase vegetable production. J&K government taking a host of measures to make religious pilgrimages convenient and safe. J&K authorities working for empowerment of women. And later in a section of Incredible India, we'll take you to witness the beauty of Umananda Temple in Guwahati. The people living in the illegally occupied territory of Gilgit-Baltistan are suffering due to the government's negligence and oppressive policies. While the floods have battered life across the illegally occupied region, authorities have failed to provide them with the necessary help. The aftermath of floods has resulted in the destruction of wheat crops and has made the region vulnerable to landslides. We have a report. People in the illegally occupied Gilgit-Baltistan are leading a miserable life due to the destruction of the wheat crops in the region. The majority of the locals rely on the production of wheat for their livelihood. However, wheat harvests in the area have been wiped out by the region's heavy rains and flooding. Amid all this, when people are in immense grief, the subsidy cut on wheat and tax hikes by the authorities is rubbing salt on their wounds. Local residents have been pleading for help, but the authorities, who are brazenly discriminatory when it comes to the people of this occupied region, have turned a deaf ear. सबसे बढ़कर सर हमारे अधिकारी का अब सबको पता है कि एक ही फसल होता है पूरे सीज़न का, वो गंदम है। हमारे गंदम जितने भी हैं वो सारे ख़राब हो चुके हैं। हमारे मल मवेशी के जितने भी चारा बाहर पड़े हुए थे वो सारे ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि हमारा एक ही फसल होता है। ये हमारा पूरा इन्हिसार इन्हीं ज़रात के ऊपर होता है सर। हम तकरीबन 8 महीने अपनी खुराक इसी गंदम वगैरह से अपनी ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। तो इसी साल इन बारिशों की वजह से हमारे तकरीबन ये पूरे अधिकारी ये तकरीबन 15 गाँव पर मुश्तमिल है, छोटे बड़े 15 गाँव हैं। ये गुजारिश है कि हमारी मदद की जाए, जो भी हो इसी तरह से भी हमारी मदद की जाए, ताकि हम जो ग़िज़ाई किल्लत से महफूज रख सकें। Damaged walls and cracked land can be seen all around following the recent spell of heavy rains in Ishkoman Tehsil of district Gizar. Scores of people who were forced to relocate to makeshift shelters following the catastrophic rains of 2010 have returned to their homes. There too, getting through each day is a challenge in itself. The government had assured them of reconstructed homes after declaring their residences unsafe and the area hazardous. However, none of the 35 households has received a tile worth of renovations since that time. They are constantly living under a shadow of fear, but these plights appear to be insufficient for the authorities to take notice of the situation. हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश है और सूबे के लीडरान से गुजारिश है, 2010 से ये ज़मीन दाइन गोछार का ये सरक रही थी और इस मानसून में हालिया मानसून के दौरान इसने तेज़ी इख्तियार किया सरकने में। तो हमें हुकूमत से अपील है तो इसके बाद अल्लाह के लिए हमारा गौरसी करे। The successive governments in Gilgit-Baltistan have just passed the ball from one court to another and have failed miserably in realizing the demands of the local people. Even after decades of control over the region, Pakistan continues to accord a stepmotherly treatment to the people of the region. For Islamabad, they are second-class citizens who do not deserve any rights. Yes, you heard that right, not any, not even the fundamental ones.
Next, we move on to Jammu and Kashmir, where the preparation of hybrid vegetable seedlings in high-tech poly houses is going on in full swing. As Agriculture Department aims to provide a major boost to the vegetable cultivation in the Kashmir Valley, it is pushing for the production of high-quality seedlings. Have a look. Sowing operation of vegetable seedlings in full swing under kitchen garden scheme in the valley. To enhance the quality and increase the productivity of vegetables produced in the valley, the hybrid vegetable seedlings are being prepared in large quantities at Lal Mandi in Srinagar. A hybrid is created by crossing two different varieties of the same plant. Crossing involves taking the pollen from the male flower of one plant and transferring it to the female flower parts of a different plant. The purpose of this sowing process of seedlings is to prepare quality vegetable seedlings that will be distributed among the growers in the month of October at subsidized rates. बेसिक मोटिव जो हमारा है किचन गार्डन स्कीम का सर, लोगों तक टाइम पे अच्छी सीडलिंग और गुड क्वालिटी सीडलिंग पहुंचाना। आज हमारा ये जो ऑपरेशन है, ये जो हमारा अपकमिंग रबी सीजन आ रहा है सर, ऑटम में, तो उसके लिए गुड क्वालिटी सीडलिंग प्रोड्यूस करना, जिसमें हमारी प्राथमिकता है कैश क्रॉप्स, जो आज हम रेड कोरल ओनियन की सोइंग कर रहे हैं, या जो बाकी सोइंग और जो सीडलिंग्स हमने डिस्ट्रीब्यूट की, जो आपने अभी तक यहाँ देखी भी होंगी। तो यही है सर, ये सब कुछ चल रहा है सर हमारा, ताकि टाइमली फार्मर्स तक हम पहुँच सकें, जो उनकी ज़रूरतें हैं, और उनको अच्छा और डिजीज़ फ्री क्वालिटी प्रोड्यूस यहाँ से मिले सर। High-tech poly houses have been brought to use by the Agriculture Department Kashmir to prepare these hybrid vegetable seedlings. They will help to upscale the cropping intensity of vegetable seedlings under controlled conditions. The quality sapling material will then be provided to growers, especially kitchen garden lovers in Kashmir, which will help to give boost to their income. Many labourers are busy with the sowing process of hybrid vegetable seeds, aimed to prepare the seedlings at the proper time. बहुत ही मेहनत चल रही है। पिछले 2-3 महीनों से हम यहाँ पर अच्छी तरीके से जो काम कर रहे हैं। पिछले अगस्त से जो हमने सीडलिंग दी, उस वक्त हमने कॉलीफ्लावर और कैबेज की सीडलिंग दी। उसके बाद हमने सेकंड शिफ्ट में GM साग दे दिया। अब यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से नेक्स्ट सीडलिंग के लिए काम चल रहा है, जिसमें हम ओनियन की सीड की तैयारी कर रहे हैं। उसमें हम पहले यहाँ पर ज़मीन तैयार करते हैं, उसको पूरी तरीके से तैयार करने के बाद हम यहाँ पर जो बीज लगाते हैं वो हमने लगा दिया है, और इंशाल्लाह आगे भी काम चल रहा है। आज हम ओनियन का लगा रहे हैं, यानी प्याज का लगा रहे हैं, और तो इसमें पहले सोइंग वगैरह करते हैं, उसके बाद सीड लगाते हैं। सीड लगाने के बाद फिर घास वगैरह डालते हैं इसके ऊपर, तो फिर घास उठाने के बाद फिर थोड़ी सी हल्की सी मिट्टी वगैरह डालते हैं, और हम इसके बाद मतलब साग लगाते हैं, साग का सीड लगाते हैं या गाजर का सीड लगाते हैं। उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे हो रही है। अपनी तरफ से हम जी जान लगा के मेहनत करते हैं, ताकि अच्छा सा मतलब अच्छी सी पनीरी मिले लोगों को। हाँ, और हाई क्वालिटी का सीड होना चाहिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले। For the last few years, since the department started these exercises, growers are utilizing these vegetable seedlings prepared by experts of the Agriculture Department on a large scale, as they are getting good results in the shape of a quality vegetable crop. With such controlled environment, these poly houses are able to grow 3 times more hybrid vegetable saplings, due to which farmers will be able to avail them the entire year, even during the off-season. Moving
Moving on, the Jammu and Kashmir government is also working to develop a religious tourism circuit to strengthen the links between pilgrimage and the local economy. A number of steps are being taken in the direction to make religious pilgrimage easier and safer for the pilgrims. In the same line of steps, the Jammu and Kashmir government has initiated a skywalk project in the Bhavan area of the Vaishno Devi Shrine in Katra, whose construction is underway. Apart from that, the construction of the Durga Bhavan, a 5-story pilgrim-centric facility, is also in full swing. Take a look. The Vaishno Devi pilgrimage is considered to be one of the holiest Hindu pilgrimages. It is visited by around 35,000 to 45,000 pilgrims every single day on festivals like Navratri, and 15,000 to 20,000 pilgrims on lean days. The Jammu and Kashmir authorities keep on taking a number of steps to make the pilgrimage more comfortable and easier for pilgrims. In the same line of steps, the construction of a skywalk near the Bhavan area of the shrine is underway, which will provide separate paths for incoming and outgoing pilgrims, thus making the route easier and less time consuming. कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना है कि जो भवन पर जो जितने भी यात्री या श्रद्धालु पहुंचते हैं उनको दर्शन जो करने जा रहे हैं उनके लिए एक अलग डेडिकेटेड कॉरिडोर बनाया जाए और वापस आने वाले यात्री अलग ट्रैक से वापस आएं, ताकि जाने और आने वाले यात्रियों का आपस में किसी तरीके का मेल जोल ना हो और आसानी से बड़ी स्मूथली एक सर्कुलर तरीके से यात्रा जाकर वापस आए और कम से कम समय में लोगों के दर्शन हो। ये जो स्काईवॉक है तकरीबन 200 मीटर की लेंथ का बनाया जा रहा है और इसकी वुडन फ्लोरिंग होगी ताकि पैदल चलने वाले यात्री, नंगे पांव चलने वाले यात्रियों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। इसमें 3 वेटिंग हॉल्स भी बनाए जा रहे हैं, तकरीबन 150 यात्रियों के बैठने की सुविधा होगी, जिसमें हमारे बुजुर्ग या स्पेशली एबल्ड छोटे बच्चों या महिलाओं के लिए, और जैसे अटका आरती के दौरान दर्शन के लिए जो लोग कतार में रुके रहते हैं तो उनके लिए बैठने की ये व्यवस्था खास करके बनाई गई है। और तकरीबन 10 करोड़ की इसकी कुल मिलाकर के लागत है और ट्रैक से तकरीबन रहेगा। तो जो जाने वाले यात्री हैं वो एक फ्लाईओवर के किस्म में हम समझ सकते हैं कि एक फ्लाईओवर के किस्म से यात्री इसके ऊपर सफ़र करके सीधा भवन तक पहुंच सकेंगे और दर्शन करने के बाद जो हमारा एग्जिस्टिंग ट्रैक है उसके ज़रिए ये वापस आ सकते हैं। The skywalk will be 200 meters long and 2.5 meters wide, along with standing 20 feet above the track level. It will have seating arrangements for senior citizens and women, along with waiting halls and washroom facilities. Conceptualized with an emphasis on safety and facility, the project is being constructed with a budget of rupees 9.89 crores. पूरा डिज़ाइन इसका IIT रुड़की से डिज़ाइन करवा रहे हैं और स्कूल ऑफ एजुकेशन इसका डिज़ाइन दे रहा है और CPW इसकी एजुकेटिव एजेंसी है जिसने MRC ग्रुप को आपके काम कर एजुकेटिव एजेंसी हम लोग। तो इसके अंदर हर टाइम पे 150 के करीब 6000 के करीब यात्रा इसके अंदर से हर टाइम दर्शन करेगी और इसके अंदर बैठने के लिए 150 प्लस यात्रा आराम के लिए जगह बनाई हुई है और टॉयलेट्स हैं, एमरजेंसी स्टेयर केस हैं। 2 मीटर इसकी लेंथ होगी और जाने के लिए ये रास्ता बनेगा और आने के लिए नीचे से रास्ता आएगा इसके। The Durga Bhavan, which is a highly utility pilgrim-centric facility, is also under construction. The 5-story building will be able to accommodate around 2,500 pilgrims at once, with facilities like lockers and bathing ghats. Moreover, the introduction of radio frequency identity cards is also being helpful in keeping a track on the movement of the pilgrims, which is quite helpful when a pilgrim gets lost. तो
दुर्गा भवन तो बहुत ही अच्छा रहने वाला है अगर इसकी रिजर्वेशन बहुत आसानी से मिल जाती है, क्योंकि आजकल होता है हमारी जनरेशन के लोग तो आराम से रिजर्वेशन कर लेते हैं, लेकिन जो बूढ़े लोग होते हैं उनको पता ही नहीं होता, वो कैफ़े वगैरह जाते हैं, लेकिन उनके लिए सिंप्लिसिटी करनी चाहिए इन्हें थोड़ी। हमारी जनरेशन के लिए तो बहुत ओके है, अगर फ्री एकोमोडेशन होती है और उसके हिसाब से फैसिलिटी होती है तो बहुत ही अच्छा है, अब तक का बेस्ट सजेशन होगा इनके लिए। और स्काई वॉक का, अगर स्काई वॉक ये बिल्कुल प्लेन बनाते हैं तो बुजुर्गों के लिए, वृद्ध के लिए बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि उन्हें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और ये जो पालकी लाते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है। जो FID कार्ड मिल रहा है वो सिक्योर होगा हर एक यात्री के लिए, जैसे सभी कोई यात्री भी कोई जैसे अपने इधर उधर बिछड़ जाते हैं, अनाउंसमेंट वगैरह करवानी पड़ती है, उससे चिपसेट जो लगा है उससे वो तुरंत वो हो सकते हैं, लोकेट हो सकते हैं, वो कहाँ पे हैं, ट्रैक हो जाएंगे 2 मिनट में कि कहाँ पे है, तो तुरंत उससे एक दूसरे को जो जहाँ पे आकर एक दूसरे को खज्जल खबारी होती है वो बहुत कम हो जाएगी। और सेफ्टी भी होगी। सेफ्टी सबसे ऊपर, सेफ्टी सबसे श्राइन बोर्ड का सबसे पहला मोटिव ये है कि जो यात्री यहाँ पे आते हैं उनकी सेफ्टी सबसे पहले, इसलिए श्राइन बोर्ड ने आज तक इतनी मेहनत की है कि श्राइन बोर्ड की हम इतनी तारीफ करते हैं। श्राइन बोर्ड के जो अपने हैं CEO हैं, उनकी ये सबसे बड़ी उपलब्धता है कि वो ये भक्तों के बारे में इतना सोचते हैं, इनको इतनी फैसिलिटी दे रहे हैं। जो भी भगतजन, कई बार मैं यहाँ आकर सुनता हूँ कि हम पहली बार आए हैं और देख रहे हैं कि लोग तो बताते थे कि ऐसा रास्ता है, ऐसा है, लेकिन ये तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। वो जो लोग काफ़ी पुरानी बातें ये करते हैं, आज के दिन में वो सबसे ऊपर जो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का है वो सबसे कड़ी मेहनत के साथ आगे जा रहा है। The steps taken by the authorities for better crowd management and safety of pilgrims have made more people visit shrines like Vaishno Devi and Amarnath in the recent years. J&K administration is on a mission to channelize the potential of its women by training them in diverse fields. Various training centres have already been opened up across the territory and many more are still in the row. So today, let's take you to one such centre in the Kandi area of Rajouri, where women are not just taking their baby steps towards self-reliance, but at the same time reviving the territory's handicraft industry as well. J&K administration keeps on taking a number of initiatives to empower the women folk of the territory and make them self-reliant and independent. Taking a recent step in the same direction, a Fulkari training centre has been established in the Kandi area of Rajouri, where skill development training is being provided to women from far-flung areas of the territory. At the centre, a number of facilities and equipment are provided by the authorities, where participants received free training. हमारा जो हैंडीक्राफ्ट का जो ये सेंटर है फुलकारी एम्ब्रॉयडरी ट्रेनिंग सेंटर कंडी, ये बैकवर्ड एरिया में आता है। ये अभी इसका दूसरा बैच शुरू हुआ है फरवरी से। ये अपना 2023 को जनवरी को ख़त्म होगा। जो इनका बैच ख़त्म होगा उनके बाद ये लड़कियाँ अपना रोज़गार भी गवर्नमेंट की तरफ से लेकर लोन वगैरह लेकर ये काम कर सकती हैं। जैसा कि हमारे गवर्नमेंट की स्कीम है कोऑपरेटिव सोसाइटी, 1 लाख रुपए का कर्जा इनको मिलेगा, वो इनको वापस नहीं करना है। मैं तकरीबन 7 सेंटर देख रहा हूं और हमारे डिस्ट्रिक्ट में 23 सेंटर हैं और दूसरे और 2 मेरे साथी हैं वो भी देख रहे हैं। तो 2 सेंटर जो हैं इस बुद्धल एरिया में हैं। आज मैं अचानक ही यहाँ आया था, मैंने सोचा ये सेंटर में देख लूँ। Women are being taught Fulkari embroidery at the centre. These women weave beautiful Fulkari designs on bed sheets and pillow covers and get paid for providing their finished products to the centre. On the completion of their training, these women can also get a loan of up to rupees 2 lakhs from the government to open their own ventures. Trainees are effusive in their praises of the government for introducing such a scheme which is helping them to become self-reliant. हमारे टीचर हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करती हूं कि उन्होंने इस महकमा हैंडीक्राफ्ट की जानिब से हमें यहाँ सेंटर दिया और हम अपना रोज़गार चला रही हैं। यहाँ पे हम फुलकारी का काम करते हैं। यहाँ कंडी में हज़ारों की तादाद में पढ़ी लिखी लड़कियाँ जो घर बेरोज़गार बैठी हुई थी,
और वो यहाँ आकर अपना रोज़गार चला रही हैं। और हम ये उम्मीद करती हैं कि ये हमारा बैच ख़त्म होने के बाद जो गवर्नमेंट साइड से स्कीमें हैं वो हमें दी जाएं, जैसे सोसाइटी हुई, वेलफेयर और भी बहुत सारी स्कीमें हैं इनके पास, वो हमें मिलें और हम अपना रोज़गार अच्छे से चला सकें। Many educated girls who are unemployed and hail from far-flung areas have also joined this course in order to become more self-reliant. These girls also receive bulk orders for fulkari work and embroidery. Until now, these girls have completed embroidery on around 9 to 10 bed sheets and have sold them for up to Rs 7,000. Till now, 22 centers have been set up in the Rajouri district, which has given employment to around 400 girls. हम बहुत शौक से यहाँ काम कर रहे हैं और बहुत दूर दराज से लड़कियाँ आ रही हैं इधर। अच्छे से काम चल रहा है, हमारे टीचर भी बहुत अच्छे हैं जो हमें इधर काम सिखा रहे हैं और हमें ये काम सीखना चाहिए। और हम क्योंकि इधर बेरोज़गार लड़कियाँ थी, पढ़ी लिखी थी, जिन्होंने आगे गरीबी की वजह से पढ़ा नहीं और यहाँ पे हमें रोज़गार मिला। As women are said to be the building blocks of the society, their empowerment at the grassroots level will not just create a positive impact but also give a boost to the rural economy. It is initiatives like these that are not only helping women in Jammu and Kashmir to become more skilled but is also instilling a newfound confidence in them. Northeast India is known for its alluring beauty, endowed with rich natural resources. The region is dotted with wildlife sanctuaries and incredible tourist destinations, as well as places of historical interest, folklore, legends and adventure spots. It also boasts a rich cultural heritage that attracts tourists from all across the globe. One such destination in Guwahati city of Assam is the Umananda temple, located at Umananda Island in the middle of the Brahmaputra river. Umananda has been attracting tourists from the nook and corner of the world as it holds historical significance. Have a look. The distinctive Himalayan terrain and culture that makes the northeast region different from the rest of India serves as a tourism magnet for the region. One such tourist attraction is the Umananda temple, which is a Shiva temple located at the Umananda island in the middle of the river Brahmaputra in Guwahati. Also known as Peacock Island, it is regarded as the world's smallest inhabited riverine island. The temple is situated on the top of the Bhasmasala hill. One has to take stairs to get to the temple. The architecture and structure of the temple are a show of the skills of Assamese artisans and architects. Additionally, the rock on which Lord Shiva meditated is embedded in the Sanctum Sanctorum. The name Umananda comes from two Hindi words, namely Uma, which was another name of Lord Shiva's wife Parvati, and Ananda, which means happiness. This temple has a history attached to it. शिव जी का पहला पत्नी सती देवी का जब देहांत हुआ था तब सारा जगह घूम घूम कर ये जगह सुन लिया। यहाँ पर शिव जी ने बहुकाल तपस्या किया था। तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को पठाया। कामदेव ने शिव जी का तपस्या भंग कर दिया, लेकिन शिव जी ने क्रोध से देखकर इसका कामदेव को यहाँ पर भस्म कर दिया, इसलिए पहाड़ का नाम है भस्मासल। फिर कामदेव का पत्नी था रोटी देवी और पार्वती के कहने पर फिर कामदेव को यहाँ पर फिर पुनर्जन्म दिया, इसलिए ये राज्य का नाम है कामरूप कामाख्या। और ये पीकॉक आइलैंड बोलता है, इसलिए ये देखने जैसे पीकॉक जैसे दिखता है, इसलिए ब्रिटिश लोग ने इसको पीकॉक आइलैंड बोलता है।
Around 1,000 to 2,000 people visit the temple every day. Even foreign tourists from Nepal, the Netherlands, US and South Africa visit the temple. On the occasion of Shivratri, lakhs of tourists visit the temple to offer their prayers to the deity. From Uzan Bazar Ferry Ghat, travellers can board the inland waterway that runs between Peacock Island and the city of Guwahati. A smart city project is also under construction by the Assam government to bring in more tourist footfall. हम लोग का उद्देश्य ये टूरिज्म का घाट है। ये हम लोग का पब्लिक का जो है ना, ये नहीं है ये जो पब्लिक के लिए, ये सिर्फ टूरिज्म का घाट है, असम गवर्नमेंट का। यही एक है टूरिज्म घाट हम लोग का। जो मंदिर में बहुत दूर दूर से लोग आता है ना, फॉरेन कंट्री वाला आता है, बहुत टूरिज्म आता है, लोग को इधर लेने के लिए आता है। हम लोग VIP के लिए भी दूसरा आता है। मुनाफा है, सेटिस्फेक्शन भी है, आने से बहुत टूरिस्ट बोलता है बहुत अच्छा लगता है आपका इधर में आके, बहुत दिल में सुकून मिलता है, भगवान का दर्शन होता है। और वो भी ये जो हम लोग का इधर में प्राय जितना भी टूरिस्ट आता है कोई कुछ मतलब ख़राब नहीं पाता है, सब अच्छा ही पाता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है, ऐसा ही बोलता है। देखा जाए कि एवरेज टूर पर हर रोज़ कितने? एवरेज हर रोज़ तो आपका मतलब सीजन मतलब जब ठंडा के टाइम में बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी फिर भी 1000, 1200, 1800, 2000 आदमी हो जाता है पर डे। The Umananda temple is not only a place of prayer but also a delightful deviation from the norm. This place offers a calm atmosphere without the noise of obtrusive religion, which invites you to sit down and take in the scenery. Well, that's all we have for you in this week's episode. Till we see you next week, it's goodbye from the entire production team.